Hello everyone, welcome to my channel. So today we will learn some new concept about n8n platform where we make AI agents. So सबसे इम्पोर्टेंट इसके फंडामेंटल्स होते हैं. अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे. तो विल स्टार्ट विद सम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नोड्स. नोड्स को आप एजेंट बोल सकते हो, वर्चुअल एजेंट्स बोल सकते हो, एक पॉइंट बोल सकते हो. तो नोड्स की सब कैटेगरीज होती हैं. नोड्स पर क्या परफॉर्म होता है वो हम आज सीखेंगे. पहला इसमें आता है ट्रिगर नोड्स. ट्रिगर नोड्स. दूसरा एक्शन नोड्स, कोर नोड्स, AI नोड्स, लॉजिक नोड्स, मर्ज नोड्स, वेट नोड, HTTP रिक्वेस्ट, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो, वेब हुक, फंक्शन एंड कोड नोड. अब इन सब का अपना अपना एक मीनिंग है जिसे वी विल फाइंड आउट. सो ये n8n नोड है क्योंकि मैं n8n पर ही काम करता हूँ. तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे क्या है. ट्रिगर नोड क्या होता है, व्हाट दे विल डू. ए ट्रिगर नोड स्टार्ट्स द वर्कफ्लो. जब भी आप अपना कोई वर्कफ्लो बनाते हो किसी भी एजेंट का, तो जो ट्रिगर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करता है. बोलते हैं ना गन का ट्रिगर दबाना. तो ट्रिगर दबाओ बोले तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो वो उसको स्टार्ट करता है. व्हेन शुड माय ऑटोमेशन बिगिंस. कब हमारे जो ऑटोमेशन है वो स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा वो बताता है. अब कॉमन एग्जांपल इसकी क्या रहती है, स्केड्यूल ट्रिगर. स्केड्यूल ट्रिगर होता है रन एवरी मंडे एट 9 AM. ये मैंने एग्जांपल लिए. जैसे सपोज करो आप सोशल मीडिया एजेंट बनाते हो, तो उसमें आप ट्रिगर रखते हो कि हर मॉर्निंग मंडे को 9 AM में एक पोस्ट डालनी है फेसबुक पे. तो वो स्केड्यूल ट्रिगर का काम होता है. अब वेब हुक क्या होता है. Webhook starts when an external system sends the data. Webhook तब स्टार्ट होता है जब सपोज करिए आपका AI एजेंट किसी एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्टेड होता है बाय थर्ड पार्टी लाइक डेटाबेस और समथिंग एल्स. थर्ड है टेलीग्राम ट्रिगर. नाउ सपोज करो कोई इंक्वायरी रिसीव कर रहा है अपने टेलीग्राम चैनल से. तो टेलीग्राम ट्रिगर कम्स इनटू एक्शन व्हेन यू गिव द नेम ऑफ टेलीग्राम ट्रिगर. Last one is Gmail trigger. It starts when a new email arrives. So these are all types of trigger. It can be of social media, it can be of any event that you want to start. Trigger can be of any type. Google Sheet trigger also. You can start collecting data and finding out telephone numbers or during the sales AI agent. So Google Sheets you can start. So start when someone is submits a form. So फॉर्म ट्रिगर तब काम करता है जैसे कोई वैकेंसी के लिए पोस्ट निकाली है तो उसकी एलिजिबिलिटी और पूरी डिटेलिंग उस फॉर्म के थ्रू फिल होती है. फॉर एग्जांपल न्यू गूगल फॉर्म सबमिशन. सो योर डेटा इज सबमिटेड थ्रू अ फॉर्म. इट विल बी बाय अ ट्रिगर and AI processes the lead. Real world example देखें तो when a customer submit I am interested in your AI automation service, the Google form triggers starts the entire workflow. So in nutshell trigger क्या करता है, आपके workflow को starting देता है. So you can say like that. Next is action nodes. अब ये क्या करता है, एक्शन नोड परफॉर्म एन एक्चुअल टास्क. ये नोड आपका कोई भी टास्क परफॉर्म करता है. जैसे व्हाट शुड बी द ऑटोमेशन डू, किस चीज़ के लिए है, व्हाट एग्जैक्टली फंक्शन वो परफॉर्म करे. जैसे जीमेल क्या करता है, सेंड करता है आपका ईमेल. गूगल शीट क्या करता है, रोज और कॉलम में आपका डेटा सेव करता है. गूगल कैलेंडर क्या करता है, इवेंट करता है क्रिएट. जैसे सपोज करो किसी का इंटरव्यू स्केड्यूल करना है, आपने AI एजेंट बनाया है विच विल स्केड्यूल द इंटरव्यू फॉर द कैंडिडेट्स. इन दैट केस गूगल कैलेंडर कम्स इनटू प्ले. फिर आता है टेलीग्राम. इफ समवन इज यूजिंग योर चैनल एंड आस्किंग क्वेश्चन, तो यू विल रिसीव द टेलीग्राम मैसेज. एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड स्लैक इज यूज्ड. सो स्लैक कॉर्पोरेट फील्ड में एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग अपडेट करते हैं अपनी टीम्स को. गूगल ड्राइव फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग अ फाइल. नोशन पेज क्रिएट करने के लिए. अब फॉर एग्जांपल कैसे है, एक्शन नोट क्या करेगा, न्यू लीड आई फॉर्म सबमिशन के थ्रू, गूगल शीट में उसका डेटा गया, जीमेल में ईमेल ड्राफ्ट हुआ, पर्सनलाइज ईमेल. और जीमेल नोड इज एन एक्शन नोड बिकॉज इट परफॉर्म्स एन एक्शन. तो यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो जीमेल कर रहा है बिकॉज इट इज सेंडिंग द ईमेल टू द क्लाइंट. इन नटशेल, एक्शन टू डू समथिंग. नाउ थर्ड इज कोर नोड.
Core node are n8n general purpose building blocks. They are necessarily not connected to a specific service like Gmail or Telegram. They help you transform, organize and control data. फॉर्मेटिंग बोल सकते हैं हम इसको, जैसे वर्ड में फॉर्मेटिंग होती है तो ये नोड क्या करता है, फॉर्मेटिंग की चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे एडिट फील्ड करना है, लिमिट है उसमें, सॉर्ट, रिमूव डुप्लीकेट्स, न्यू लिस्ट, ऑपरेशन डेट टाइम। फॉर एग्जांपल गूगल शीट्स गिव्स यू डिटेल देता है, नेम, ईमेल, कंपनी। यू कैन यूज अ कोड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नोड टू टर्न द ईमेल टू john@gmail.com। सो फ्रॉम कैपिटल से देख सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट इट टू द स्मॉल वन। So, in nutshell, core equals to work with data. This is what exactly core node performs. Now, fourth is AI node. AI node and intelligence reasoning to your workflow. As the name indicates, AI which does the automation. जैसे Open AI, Gemini, Anthropic, Chat GPT. These are all the called as intelligence nodes. They will perform things automatically. For example, your workflow receives, I am interested in your enterprise plan but need to know if you provide onboarding. So AI इस पे डिसीजन लेता है, प्रोडक्ट का क्वेश्चन देखेगा, प्रायोरिटी क्या है, हाई, टॉपिक एंटरप्राइज है, एक्शन सेंड सेल्स इंफॉर्मेशन, देन योर वर्क फ्लो कैन ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड। इट मीन्स एआई उस चीज़ को फाइंड आउट कर रहा है, उसकी इंटेंसिटी देख रहा है और उसको भेज दे रहा है। सो एन एआई एजेंट इज मोर पावरफुल देन सिंपली आस्किंग एन एआई मॉडल टू जनरेट टेक्स्ट। जैसे चैट जीपीटी में आप टेक्स्ट जनरेट करते हो, उससे ज़्यादा पावरफुल होता है एआई एजेंट, बिकॉज एआई एजेंट चीज़ों को पहले क्लासिफाई करता है, लाइक कस्टमर क्वेरी आया एआई एजेंट के पास, देन एआई एजेंट विल डिसाइड व्हाट टू डू बाय यूजिंग द टूल्स linked with that AI agent. Okay, it will find the email, it will go to the database in Google Sheet, it will use this calculator API and generate the answers. So AI node, what does AI equals to think, understand and generate. So in nutshell हम इसको ये बोल सकते हैं कि AI क्या करता है, सोचता समझता है फिर उसको जनरेट करता है। नाउ लॉजिक नोट, लॉजिक नोट्स मेक डिसीजन। पढ़ा होगा हम लोगों ने कॉलेज स्कूल्स में भी, लाइक एंड और नॉट नैंड, दिस टाइप ऑफ लॉजिक ऑपरेशन जो अकॉर्डिंगली काम करता है कि ये होगा तो ये नहीं होगा, इफ 80 स्कोर आए, 85 लीड स्कोर आए, देन यू आर पास, अदरवाइज यू विल बी फेल, लाइक दैट। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, लाइक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे योर इफ नोड कैन से स्कोर इज 70 मोर ग्रेटर देन 70, यस अलर्ट सेल्स हिम, अदरवाइज नो। सो अनदर एग्जाम्पल है, ये ईमेल वेट ह्यूमन क्या करना है, तो इसमें अलग अलग आ जाते हैं, लूपिंग आ जाती है, वेट, मर्ज, इफ स्विच, तो दीज आर वेरी इजी। तो लॉजिक नोड बेसिकली इन शॉर्ट यू कैन से इट विल डिसाइड how to do the perform. Now merge node, as the name indicates, the merge node combines data or branches from different parts of workflow. Like imagine करो Gmail में डाटा है, डाटा मर्ज करना है AI एजेंट को, तो शीट भी है, तो गूगल शीट में भी डाटा है, जीमेल से भी डेटा आया, तो ये दोनों में चेक करेगा एआई एजेंट और आपको दे देगा। जैसे जीमेल में कस्टमर ऑर्डर नंबर इतना आया, स्टेटस शिफ्ट हो गया, गूगल शीट रिटर्न पॉलिसी, तो ये दोनों को कंबाइन करके एक यूजफुल मैसेज जनरेट कर देगा। तो मर्ज मीन्स कंबाइन। नाउ वेट नोड, द वेट नोड पॉजेज द वर्कफ्लो एंड कंटिन्यूज लेटर। अब वेट नोड में क्या होता है, जैसे आपका वर्कफ्लो बहुत बड़ा है, कोई एआई एजेंट बना रहे हैं, so you keep on thinking what would we have to do next. So in that case you can apply this wait node. This is extremely useful for follow up automation. So like new lead आई, send email किया, wait किया 2 दिन, did customer respond, no, send follow. So ये ऑटोमेटिकली आप फॉलो अप जनरेट कर सकते हैं, आपका एआई एजेंट ऑटोमेटिकली पॉज करेगा फिर कंटिन्यू लेटर करेगा। पॉज इन द सेंस आपका वर्क फ्लो पॉज नहीं करेगा, बल्कि आपका प्रोसेस फॉलो करेगा। जैसे सेल्स लीड आपने पिच की किसी को, क्लाइंट इंटरेस्टेड हुआ, लेना है, खरीदना है, नहीं खरीदना है, तो एक फॉलोअप, 2 फॉलोअप, तीसरे फॉलोअप में क्लोज कर देगा, जैसा भी आप डिसाइड। Now HTTP request node, this is one of the most powerful node in n8n. It allows n8n to communicate with almost any service that provides an API. How do I connect n8n service that doesn't have a dedicated node? नाउ n8n में HTTP रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, एक्सटर्नल API से कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल प्रोग्राम से आप डेटा फेच करवा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने कोई वर्क फ्लो बनाया, उसमें पेमेंट गेटवे ऐड करना है, तो आप वो पायनियर हो गया, पेपल हो गया, यू कैन create the APIs, you can put the APIs keys and make your API accordingly. Now, in nutshell, HTTP request talks to external API. It links to external API. Execute workflow. This is the final step mostly. Whenever the workflow is created, you can analyze it, execute, send follow up, और पूरा ये पूरा रिजल्ट देता है, एक रिटर्न, एक आउटपुट देता है. यू कैन से you might create a workflow, lead management, B, email follow up, C, customer notification, then call them whenever it is necessary. In execute, call another workflow, it calls the another workflow, you can say. Now webhook allows another application to send directly data directly into n8n. Think of it of a doorway into your gateway. आपने कोई वेबसाइट बनाया, उसमें वेबहुक क्रिएट किया, वो n8n से लिंक्ड है, जेमिनाई, जीमेल. So your website might send name John, email this message, I want a demo. So webhook versus trigger, a simple way to remember. Another application is calling my workflow. Suppose आपने अपना वर्कफ्लो बनाया और वो कॉल हो रहा है किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से. स्केड्यूल ट्रिगर, टेलीग्राम ट्रिगर, मतलब वर्कफ्लो आपने n8n में बनाया और टेलीग्राम के लिए आपने बनाया, तो कोई भी टेलीग्राम पे क्वेश्चन कर रहा है तो वो आपका वर्कफ्लो यूज करके टेलीग्राम पे ही उसको आंसर मिल रहा है. सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स. webhook received a data from other apps. Okay. Function and code, this is where you can write JavaScript to customize your workflow. This is little advanced. अगर आप बहुत ज़्यादा advanced में जाते हैं तो यहाँ पर you can have the custom logic. You can put your customized code instead of drag and drop. So the easy way to remember everything: trigger is to start the workflow, action performs an operation, code manipulation data, AI is a brain, you can call as logic decision, merge combine wait pause, HTTP request talks to API, execute workflow, it calls another workflow, webhook door कह सकते हैं, request external request, code custom brain. If you will put all things together, you can make like structure like this. So for more information, keep following, keep watching. And the whole concept in one sentence: trigger starts it, code prepares it, AI thinks, logic decides, action do the work, merge combines information, wait controls timings, HTTP request, APIs execute the workflow, reuses workflow, webhooks receive external data, code handles custom logic. Once you understand these 11 building blocks, you can build almost any n8n automation, from a simple Gmail automation to a full AI sales support agent. For more, you can keep on continuing the videos that will be publishing. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना.